Assalamu alaikum everyone. Since maximum number of participants have joined in, I would like for us to start with this our session. Mahira Tahir, would you like to recite few verses from Quran? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. I swear by the forenoon and by the night when it becomes peaceful. Your Lord has neither forsaken you nor has become displeased, and the hereafter is much better for you than the present life. And of course, your Lord will give you so much that you will be pleased. Did he not found you an orphan and give you shelter? And he found you unaware of the way, then he guided you. And he found you in need, then made you need-free. Therefore, as for orphan, do not oppress him. And as for the beggar, do not scold him. And about the bounty of your Lord, do talk. Jazakallah. Thank you, Mahira, so much. Greetings and assalamu alaikum, everyone. My name is Abraham Marcus. I'm head of Education Department SYNCH HPS. And this session is made accessible to all by a platform provided by National Education Department of SYNCH. Our goal is to equip medical students with knowledge of multiple pathways a young doctor can adopt after MBBS. Education Department of HPS focuses on providing students with series of career guidance sessions in these summer breaks, brought to full reality by the support of our National Cabinet SYNCH. Starting this very moment today with PLAB and Kingdom of Saudi Arabia plus MRCS on Sunday, 30th of June. Our host of today's session will be Mahira Tahir from HPS Medical and Dental College. Over to you now, Mahira. So, ladies and gentlemen, just type in if you guys can hear me.
Am I audible? Yes, okay. So, ladies and gentlemen, before we begin, allow me to introduce myself. My name is Mahira Tahir, and I am currently a fourth year MBBS student. And it gives me a great pleasure to be your host for today's session. And I'm honored to extend a warm welcome to our distinguished guests and esteemed colleagues. Today, we are privileged to have with us our president of SYNCH HBS, Mr. Ibad Faisal Qureshi, our national vice president, Mrs. Zahra Abrar and Mr. Abdullah Shehryar, and our very own esteemed national president, that is Ms. Suraksha Chimrani. Thank you all for gracing us with your presence today. So before we move in, I just want you guys to be very comfortable. Just grab a cup of coffee and be right over here with us. So we are delighted to introduce our esteemed speakers for this session on the Professional and Linguistic Assessment Board exams, that is also known as PLAB. So our first speaker is Dr. Saad Afzal. He is a graduate of Shifa College of Medicine. He has previously served as a demonstrator at HBS Medical and Dental College and is currently serving as a junior doctor in the UK after successfully clearing his PLAB 1 and PLAB 2 exams. So I guess Dr. Saad Afzal is right here with us. So let's start. Hello, everyone. Am I audible? Yes, I think I am. Okay, my name is Dr. Saad Afzal. As she already said that I am a graduate of Shifa College of Medicine, following which I did my house job, then did teaching as a demonstrator, gave my PLAB exam, and now currently I am looking at jobs in the UK. So today I will be giving you a basic understanding or a guide on basically what the UK is, how you can apply via this PLAB pathway, what alternative pathways you have, mainly focused around PLAB 1. Achha. Can everyone see my screen? Yes, we can. Okay. Achha, basically, let's begin. So before we begin, मैं थोड़ी सी बात करूँगा on UK versus the US, क्योंकि दो या तीन ही ऑप्शंस होती हैं जो कंसिडर कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स व्हेन दे गो इनटू थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या फाइनल ईयर के आइदर वी स्टे इन पाकिस्तान या फिर हमने यूके करना है या फिर हमने यूएस का पाथवे लेना है। तो दोनों पाथवेज में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है डिपेंडिंग ऑन आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। एक तो प्रेपरेशन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाता है। यूएस की प्रेपरेशन आप ड्यूरिंग अपनी जो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर उसमें स्टार्ट कर देते हो और उसमें आप जल्दी फारिग हो सकते हो, एक्सपेडाइट कर सकते हो थोड़ा प्रोसेस। दूसरा फिर आपके टोटल ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन होती है उसमें फ़र्क होता है, कॉस्ट में फ़र्क होता है। तो स्टार्टिंग विद द यूके, आफ्टर यू ग्रेजुएट बेसिकली वहाँ से लेकर टिल यू कंप्लीट ट्रेनिंग, जिसके बाद आप एक कंसल्टेंट बन जाते हो, उसमें ऑन एवरेज इट विल टेक यू 11 to 13 ईयर्स। 11 ईयर्स अगर आपका सब कुछ वेरी स्विफ्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में हो रहा है, 13 ईयर्स अगर आपको 1-2 साल टू बिल्ड योर सीवी इधर लगाने पड़ जाते हैं। इसमें मैं बाद में आऊँगा एग्जैक्ट ब्रेकडाउन क्या होता है। यूएस में यही पाथवे स्लाइटली शॉर्टर है, लेकिन उसमें भी 8 years to 11 years लग जाते हैं। कॉस्ट का एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है जो अक्सर लोगों को फैक्टर इन करना पड़ता है। यूके की कॉस्ट बेयर बोन्स अगर हम बात करें तो अराउंड 5800 पाउंड्स बनती है, और यही अगर सॉरी डॉलर्स बनती है, मैं डॉलर में कन्वर्ट कर दिया था। और अगर ये यूएस से कंपेयर करें तो उसकी जो बेयर बोन्स कॉस्ट है वो अराउंड $15,000, तो रफली
2.5-3 टाइम्स का फर्क पड़ जाता है। लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंटर्स हैं। कुछ यूके में आपको अब आजकल एडिशनल चीज़ें अगर करनी पड़ जाएं तो आपकी कॉस्ट अप टू 10,000 11,000 चली जाती है। और यूएस में इसी तरह अगर आपको इलेक्टिव्स करने पड़े और वो पेड हों, पैसों के मिले, तो वो आपकी $3,000 to $5,000 पर इलेक्टिव कॉस्ट ऊपर जा सकती है। फिर इनहेरेंटली एग्जाम्स में डिफरेंस है। जो यूके के एग्जाम्स हैं दे आर स्लाइटली ईजियर। 2 एग्जाम्स हैं, एक आपका थ्योरेटिकल है, एक ऑस्की बेस्ड है। यूके के जो यूएस के एग्जाम्स हैं, आपके स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, मच मोर डिफिकल्ट। उसमें कोई ऑस्की बेस्ड नहीं है, एक बेसिक साइंसेस का, एक क्लिनिकल साइंसेस का है। वीज़ा पॉलिसीज में फ़र्क है। यूके की थोड़ी बेहतर वीज़ा पॉलिसी है, यूएस की डिफरेंट वीज़ा पॉलिसी है। और फाइनली वंस यू कंप्लीट योर ट्रेनिंग और आप कंसल्टेंट बनते हो, तो कंसल्टेंट की जो सैलरीज होती हैं उनमें भी फिर सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाता है। यूएस में यही सैलरीज 250 के से स्टार्ट होती हैं, फिर 500 के 700 के तक जा सकती हैं। यूके में एनएचएस है तो एक बेस पे होती है, या मतलब तकरीबन सारे जो डॉक्टर्स हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर सब स्पेशलिटी एक ही पे स्केल पे होते हैं। वो रफली $126,000 पर एनम बनती है। हाँ, यूके के बाद अगर आप कनाडा मूव करो, ऑस्ट्रेलिया मूव करो, तो वो फिर एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। खैर, सपोज taking all that into consideration, you've decided for the UK. How is the pathway like यहाँ से? अब इसमें अगर देखें तो ये जो मैंने सामने चार्ट लगाया हुआ है, बेसिकली इसमें F1 जो है दैट इज़ योर हाउस जॉब। तो यहाँ पे पाकिस्तान में जनरली सारे हाउस जॉब, जिन्होंने यूके जाना था, सारे हाउस जॉब करके ही अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। तो F1 इन अ वे एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो आप आइडियली एंटर करते हो एज एन F2। तो हाउस जॉब हुई, आपने अपनी पूरी रजिस्ट्रेशन ली, फुल रजिस्ट्रेशन जब हो गई, यू विल स्टार्ट एज एन F2। फिर F2 के बाद एक फॉर्म होता है विच इज कॉल्ड एक रेस्ट फॉर्म। एक एलिजिबिलिटी फॉर्म है, 3 to 4 months लगते हैं उसको साइन करवाने में, विच मेक्स यू एलिजिबल टू अप्लाई इन टू ट्रेनिंग। फिर ट्रेनिंग के भी आगे 2 प्रोग्राम्स होते हैं, एक आपका होता है रन थ्रू प्रोग्राम और एक आपका कन्वेंशनल कोर ट्रेनिंग देन स्पेशलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम है। रन थ्रू ऑब्वियसली बेहतर होता है क्योंकि आप एक दफ़ा ट्रेनिंग में घुसते हो और आप कंसल्टेंट बन के निकलते हो, दरमियान में कोई और इफ्स एंड बट्स नहीं रह जाते। लेकिन ये हाईली competitive होता है, अक्सर IMGs जो कि इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनको नहीं मिलता है। तो ज़्यादा लोग कोर ट्रेनिंग वाले पाथवे के थ्रू जाते हैं, जिसमें वो अपनी CV बिल्ड करते हैं FY2 के लेवल पे, फिर वो अप्लाई करते हैं इनटू कोर ट्रेनिंग। फिर कोर ट्रेनिंग ईयर 1 to ईयर 3 उन्हें करनी पड़ती है, 3 years। फिर वो ट्रेनिंग से दोबारा एग्जिट करते हैं और दोबारा CV बिल्ड करते हैं, दिस टाइम टू अप्लाई इनटू स्पेशलिटी ट्रेनिंग, जो फिर ST3 to ST8 है, कुछ में ST9 है, जितने भी वो साल लगते हैं। तो इसमें इन अ वे आपने 2 दफ़ा अपनी CV बिल्ड करनी है, 2 दफ़ा ट्रेनिंग आपने अप्लाई करनी है, एज अपोज टू रन थ्रू जिसमें आपने सिर्फ एक दफ़ा CV बिल्ड करके अप्लाई करना है और आप फिर देन यू आर डन विद द वो। दोनों के एंड में आपका CCT होता है विच इज़ कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, और उसके बाद फिर आप कंसल्टेंट बन जाते हो। फिर उसके ऊपर अगर आपने सुपर स्पेशलाइजेशंस करनी है तो वो एडिशनल ईयर्स होते जाते हैं। तो इस तरह ये ईयर्स ऐड हो के समटाइम्स CV बिल्डिंग में ईयर्स ऐड हो जाते हैं अगर आपने कंपेरेटिव अपनी कोई ट्रेनिंग पाथवे में जाना चाह रहे हो। तो टाइम ऐड हो के 11 ईयर्स 12 ईयर्स 13 ईयर्स, तो क्विक पाथवे कहीं से भी नहीं है। अब आगे चलते हैं इनटू थोड़ी ज़्यादा स्पेसिफिक्स। तो सबसे पहले व्हाट इज़ GMC? GMC इज़ बेसिकली लाइक द PMDC ऑफ UK। उनकी रेगुलेटरी बॉडी है जो डॉक्टर्स को रेगुलेट करती है। टू वर्क इन द UK आपको GMC के साथ रजिस्टर होना पड़ता है। अब रजिस्टर होने का सिर्फ एक पाथवे नहीं है, उसके 3 से 4 पाथवेज हैं जिनमें मैं सब में बात करूंगा। जो मोस्ट कॉमन पाथवे है जो आप सब ने सुना हुआ है वो प्लैब वाला पाथवे है। क्या आप करते हो? आप उसमें प्लैब 1 देते हो, प्लैब 2 देते हो, अपना OET IELTS अपना इंग्लिश का एग्जाम देते हो, और आप अप्लाई कर सकते हो फॉर ए GMC रजिस्ट्रेशन। जो दूसरे पाथवेज हैं उसमें रॉयल कॉलेज एग्जाम्स आ जाते हैं, जिन पे अभी मैं बाद में आता हूँ। वो एग्जाम्स भी देके आप इसी पाथवे पे चढ़ सकते हो रजिस्ट्रेशन के। वंस आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है
then you are eligible to work as a junior doctor in a UK. और जो आपको रोल मिलता है मोस्ट लाइकली वो या तो मिलता है एज ए मेडिकल ऑफिसर का, या आजकल थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है एज F1 या हाउस ऑफिसर इक्विवेलेंट, या फिर आपको मिलता है PG1 PGY1 ट्रेनी इक्विवेलेंट। ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होता है लेकिन उसके इक्विवेलेंट आपकी सैलरी स्केल बनता है। तो मोर लेस आप या मेडिकल ऑफिसर होते हो या PG1 होते हो या हाउस ऑफिसर, इसी में आप दरमियान में फिरते रहते हो जब आप बेसिक अपनी रजिस्ट्रेशन लेते हो। डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आपने इसके लिए सुनी होंगी। दे कैन बी कॉल्ड F2 SHO जूनियर क्लिनिकल फेलो, FY2 FY1 इक्विवेलेंट, सबका एक ही मतलब है। नाउ फॉर द पाथवे, सबसे पहले प्लैब पाथवे की अगर समरी हो, यू कंप्लीट योर हाउस जॉब, आप GMC रजिस्टर करोगे प्लैब 1 की डेट लेने के लिए, यू गिव योर प्लैब 1 पास होता है, यू गिव योर प्लैब 2, वो क्लियर होता है, यू अप्लाई फॉर ए GMC रजिस्ट्रेशन, आपको वो मिल जाती है, फिर आप जॉब ढूंढते हो एज एन F1 या F2 या जूनियर क्लिनिकल फेलो, वो आपको मिलती है। आप 1 साल लगाओगे, अपनी CV बिल्ड करोगे और अपने और एग्जाम्स दोगे जो ट्रेनिंग में घुसने के लिए चाहिए, और फिर आप ट्रेनिंग में अप्लाई करोगे एज ए CT1, जो तकरीबन ट्रेनिंग का जूनियर मोस्ट लेवल है। तो इस पाथवे के थ्रू आप जो UK में घुसते हो वो आप बेसिक बेयर बोन्स जो लेवल होता है जूनियर मोस्ट, उससे आप एंटर करते हो। लेकिन इसके अलावा भी पाथवेज हैं, जैसे एक रॉयल कॉलेजेस के एग्जाम्स दे के आप आ सकते हो। उसमें क्या होगा, उसमें आप हाउस जॉब करोगे यहीं से, देन आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपका FCPS क्लियर हो गया है, ट्रेनिंग मिल गई है, ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली, या फिर आप किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में जैसे जनरल सर्जरी आ गई, उसमें एक मेडिकल ऑफिसर लग गए हो, तो आफ्टर अबाउट 1 to 2 years, हर स्पेशलिटी को वेरी करता है, जनरल सर्जरी की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मेडिसिन की 2 years है, आफ्टर 2 years आप MRCP 1 to 3 दे के एक स्लाइटली सीनियर लेवल पे एंटर कर सकते हो। तो MRCP क्या है, ये मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ P फिजिशियंस है, S सर्जन्स है, EM इमरजेंसी मेडिसिन, इस तरह हर जो सब स्पेशलिटी है उनके अपने रॉयल कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं, जो समझ लो थोड़े एडवांस्ड एग्जाम्स होते हैं। ये डिफ़िकल्टी वाइज जो आपके मिड ट्रेनिंग पाकिस्तान में एग्जाम्स होते हैं जिन्हें IMM कहते हैं, उसके इक्विवेलेंट डिफ़िकल्टी के होते हैं। तो ये आप दे के डायरेक्ट GMC रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, और अगर आप ये पाथवे करते हो देन यू डू नॉट नीड प्लैब। फिर आपके ये जब तीनों पार्ट्स या 2 पार्ट्स, जितने भी आपके रॉयल कॉलेज के एग्जाम्स के पार्ट्स हैं, अगर आप सर्जरी परस्यू कर रहे हो तो उसके 2 पार्ट्स हैं, मेडिसिन कर रहे हो तो उसके 3 पार्ट्स हैं, तो जब आपने तीनों पार्ट्स दे दिए तो फिर आप रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट ले सकते हो। फिर क्या क्या होगा, आपने 2 years पाकिस्तान में स्पेंड कर लिया स्पेशलिटी में, आपने अपने एग्जाम्स दे दिए, आप UK अब जा सकते हो, और आपका जो स्टार्टिंग लेवल है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। फिर एज अपोज टू FY2 या SHO जो जूनियर लेवल है, आप एनीवेयर फ्रॉम CT1 to CT3 स्टार्ट कर सकते हो। और जब आप इस लेवल पे स्टार्ट करते हो, तो जब आप ट्रेनिंग पाथवे एंटर करते हो तो आप डायरेक्टली ST लेवल पे एंटर करते हो या सब स्पेशलिटी ट्रेनिंग में, तो एक तरह से आपकी जो कोर ट्रेनिंग है मेडिसिन की वो स्किप हो जाती है। तो ये भी एक पाथवे है जो कुछ लोग लेते हैं, स्पेशली आजकल कंसिडरिंग प्लैब 1 का वेट टाइम कितना ज़्यादा है, प्लैब 2 का वेट टाइम कितना ज़्यादा है, तो बजाय कि वो 2-3 साल ज़ाया हो पूरे प्रोसेस में और फिर जॉब्स ढूंढने का प्रोसेस, तो कुछ लोग डायरेक्ट फिर रॉयल कॉलेज के एग्जाम्स दे देते हैं। फिर इसमें यह क्या है, आपके कॉस्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो कॉस्ट मोर लेस सिमिलर आती है, क्योंकि इवन दो रॉयल कॉलेजेस के एग्जाम्स महंगे हैं लेकिन वो पाकिस्तान में आप दे सकते हो, तो UK जाके एग्जाम देने का खर्चा जो प्लैब 2 का है वो इवन आउट कर देता है ये जो रॉयल कॉलेज की कॉस्ट है। फिर थर्ड पाथवे सीजर पाथवे होता है, ये अभी उन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है या प्रमोट कर रहे हैं। इसमें होता यह है कि आप पाकिस्तान में अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हो जो भी आपका इंटेंडेड है, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपीडिक्स, जनरल मेडिसिन, गैस्ट्रो, जब आपने यहाँ FCPS कंप्लीट कर लिया तो फिर आप अपने रॉयल कॉलेजेस के एग्जाम्स दे के फिर आप उनके तकरीबन जो हाईएस्ट लेवल होता है ट्रेनी का उसके इक्विवेलेंट या उससे 1-2 ग्रेड्स ऊपर नीचे जाके लगते हो। इसकी UK में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, रजिस्ट्रार्स कहते हैं, तो ये सीनियर रजिस्ट्रार आप मोरलेस लग जाते हो। इस पाथवे का एडवांटेज ये है कि आपको किसी भी पॉइंट पे ट्रेनिंग में घुसना नहीं होता है। ये जो सीजर एक फॉर्म होता है, काफ़ी एक्सटेंसिव फॉर्म होता है, मल्टीपल ईयर्स लग जाते हैं उसको फिल करने में,
लेकिन अगर आप वो फॉर्म अपना साइन ऑफ करवा लो तो आपको सीसीटी मिल जाती है, तो एक तरह से आप ट्रेनिंग पाथवे में एंटर हुए बगैर कंसल्टेंट बन जाते हो। फाइनली जो लास्ट पाथवे है वो एक एक्सचेंज प्रोग्राम है। आप FCPS 1 देते हो, 2 इयर्स पाकिस्तान में मेडिसिन करते हो, और फिर अपना जो थर्ड ईयर है उसमें आपको वो पाकिस्तान गवर्नमेंट UK एक्सचेंज प्रोग्राम पे भेजती है 2 साल के लिए, और फिर वापस आके आप अपना पार्ट 2 देते हो, और फिर उसके बाद आप वापस भी जा सकते हो, यहाँ भी रुक सकते हो। ये फोर्थ पाथवे होता है। अब आते हैं थोड़ी कॉस्ट ब्रेकडाउन पे, स्पेसिफिकली प्लैब पाथवे की मैं फोकस करूंगा। तो फ्रॉम आइल्स टिल आपकी जो बुकिंग ऑफ प्लैब 2 है उसकी कॉस्ट किस तरह होती है। सबसे पहले आपकी जो मेन कॉस्ट है एपिक की आ जाती है। ये आप अभी भी कर सकते हो, ये एक बेसिकली रजिस्ट्रेशन होती है, वेरिफिकेशन होती है सॉरी, कि इंडिपेंडेंट एक अथॉरिटी है जो आपकी डिग्री वेरीफाई करती है कि ये बंदे ने असल में इस कॉलेज से MBBS किया हुआ है। तो इसमें रफली 205 £200 लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट आपने आइल्स या OET एक प्री रेक्विजिट है प्लैब 1 बुक करवाने के लिए, और ये भी मतलब आपको तकरीबन 15 डेज इन एडवांस इसका रिजल्ट चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन आप अपनी इंग्लिश में कितने कॉन्फिडेंट हो, या तो आप आइल्स देते हो या आप OET देते हो। अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप आइल्स दे सकते हो, वो थोड़ा चीपर है लेकिन थोड़ा मुश्किल है, उसमें आपके £170 लगते हैं। अगर यही आप OET के लिए जाते हो तो उसमें आपके £312 लग जाते हैं, तकरीबन डबल कॉस्ट हो जाती है। नेक्स्ट पे आपकी प्लैब 1 की बुकिंग आती है, तकरीबन £270 का प्लैब 1, अभी जो मोस्ट रिसेंट उनकी वो आई है कॉस्ट ब्रेकडाउन बुक होता है। फिर प्लेबेबल £25 का, तो ऑल इन ऑल तकरीबन £700 या 2,50,000 आपकी कॉस्ट आ जाती है आइट्स के थ्रू, अगर आप प्लैब 1 तक सिर्फ जाके रुकना चाहते हो। यही अगर OET है तो तकरीबन ये 60,000 ऐड कर दो। फिर नेक्स्ट आपने प्लैब 1 दिया, पास हो गया, अभी नेक्स्ट आपकी क्या कॉस्ट है। नेक्स्ट आपका प्लैब 2 एग्जाम है, सिग्निफिकेंट ये कॉस्ट होती है, £1,000 का एग्जाम बुक होता है, तो ये तकरीबन आपके 4 लाख रुपए बन जाते हैं। फिर उसके बाद आपका 6 मंथ्स विजिट वीज़ा जो लगता है, £115 उसका स्टैंडर्ड रेट है। फिर जब आपने UK में एकेडमी लेनी है वो £600 की होती है, जो रिटर्न टिकट है 700 to 900 का होता है। रेंट और लिविंग 1 मंथ इन द UK अराउंड £1,100 बन जाती है। और लास्टली GMC रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ जो है वो तकरीबन £160 है। इसमें मिसलेनियस चार्जेस भी होंगे, 50-100 लग सकते हैं, और तो मोर और लेस £4,000 £3,900 आपकी कॉस्ट है फ्रॉम प्लैब 2 टिल आपकी फुल रजिस्ट्रेशन, जो तकरीबन 15 लाख बनता है। लास्टली क्लिनिकल इलेक्टिव की मैं बात करूंगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अभी इसका UK में बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है, पहले तकरीबन नहीं था, US में सिर्फ होता था, लेकिन आजकल इन एनी गिवन डिपार्टमेंट 2 से 3 लोग इलेक्टिव कर रहे होते हैं, और ये एक अनसेड अनस्पोकन रूल बन चुका है कि वो जिसने क्लिनिकल इलेक्टिव नहीं किया होता उसको सीरियसली कंसिडर नहीं करते। तो अगर सिर्फ इलेक्टिव की कॉस्ट बात करें, अगेन ये मोर रीसेंट डेवलपमेंट है, लेकिन अब वो इलेक्टिव के चार्जेस लेने शुरू हो गए हैं, कुछ नहीं लेते, कुछ अप टू £500 लेते हैं, ऑन एवरेज £250 है। फिर अकोमोडेशन अगर आपने 3 महीने की वहाँ करनी है, लोग स्पेयर रूम यूज़ करते हैं, एयरबीएनबी स्प्लिट कर लेते हैं अराउंड, लेकिन फिर भी £600 बन जाती है, तो वो £1,800। फिर आपका जो फूड है वो भी अराउंड £400-500 अ मंथ, £1,500 बन जाता है। फिर मिसलेनियस चार्जेस जिस तरह ट्रैवल हो गया, और भी आपने वहाँ पे ALS देने का सोच लिया है, कोई और आपको इलेक्टिव मिला है उसकी कॉस्ट देनी पड़ गई है, तो इस तरह मिसलेनियस चार्जेस £500 और पड़ जाते हैं। तो अगर आप एक इलेक्टिव 3 मंथ का इसमें ऐड करो तो वो अराउंड £4,300 एडिशनल आपकी कॉस्ट आ जाती है, जो रफली 15 लाख बनते हैं। अब अगेन वाई द क्लिनिकल इलेक्टिव, क्योंकि ये तकरीबन पहले इसका कोई ट्रेंड नहीं था, कोई इसकी बात नहीं करता था। यही है कि ये अब एक अनसेट रूल है। काफ़ी ट्रस्ट होते हैं जिनमें, ट्रस्ट बेसिकली जो हॉस्पिटल आप अप्लाई करते हो या ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, वो अब एडवर्टिजमेंट्स ही इंटरनल एप्लीकेंट्स ओनली करते हैं, जिनसे उनका मतलब होता है जिन्होंने हमारे पास सिलेक्टिव किया है। और मोर लेस तकरीबन सबको कोई बंदा चाहिए जिसके पास NHS एक्सपीरियंस हो। तो अगर 2 कैंडिडेट्स हैं, इक्वल CV है, लेकिन एक के पास 1 महीने का भी NHS एक्सपीरियंस है
एज अ क्लिनिकल अटैची, तो वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। तो इसमें अब मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप अपना जो क्लिनिकल इलेक्टिव है उसको बंडल करो विद प्लैब 2, ताकि आपकी जो मेजर कॉस्ट है वीज़ा की है, आपकी एयरलाइन टिकट की कॉस्ट है, वो इसी में कवर हो जाए। और मैं तो रेकमेंड करूँगा एटलीस्ट अगर आप एक दफ़ा जा ही रहे हो तो 2 मंथ्स या 3 मंथ्स का तो करो ही करो। इसमें भी अगेन अच्छा होगा अगर 1 महीना आप बिफोर योर प्लैब 2 एग्ज़ाम करो, क्योंकि उससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी फॉर योर प्लैब 2। तो अलॉन्ग विद द एकेडमी अगर साथ क्लिनिकल इलेक्टिव भी हो, आपको थोड़ा यूके सिस्टम पता चल जाता है, एनएचएस एक्सपीरियंस आ जाता है, पेशेंट से बात करनी आ जाती है, तो आपको बहुत हेल्प करता है प्लैब 2 एग्ज़ाम में। तो इन एन आइडियल वर्ल्ड मैं एग्ज़ाम से 2 महीने पहले जाऊँगा, 1 महीना इलेक्टिव करूँगा, 1 महीना एकेडमी लूँगा और एग्ज़ाम के बाद 2 महीने अपनी अटैचमेंट कंटिन्यू करूँगा। अब आते हैं जर्नी एग्जैक्टली किस तरह होगी। स्टार्टिंग ऑफ एज अ मेड स्टूडेंट, सबसे ज़रूरी बात है कि फाइनल ईयर अच्छी तरह करो, बिकॉज योर प्लैब 1 एग्ज़ाम इज़ बेस्ड सोली ऑन आपका क्लिनिकल। तो 4th ईयर और फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम है दैट विल फॉर्म द फाउंडेशन फॉर योर प्लैब 1 परफॉर्मेंस। उसके साथ आप अलॉन्ग विद एकेडमिक्स क्या चीज़ कर सकते हो, ऑडिट्स और क्यूआई प्रोजेक्ट्स यूके में बहुत ट्रेंड है, उन्हें बहुत पसंद है और उन्हें ज़रूर कोई चाहिए जिसको एटलीस्ट अगर उसने लीड ना किया हो तो एटलीस्ट उसने उसमें पार्टेक किया हो, उसे पता हो ऑडिट क्या होता है। ये आपको सिग्निफिकेंटली हेल्प करता है। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट कुछ भी नहीं है, बेसिकली हॉस्पिटल में कोई एक प्रोसेस हो रहा है, आप उस प्रोसेस को देखते हो और उसको कंपेयर कर देते हो किसी नेशनल गाइडलाइन से कि रेकमेंडेड है ये दवाई इतने घंटे बाद मिले, मेरे हॉस्पिटल में कितने घंटे बाद मिल रही है, उसे ऑडिट कहते हैं। सिंपल होता है, जल्दी हो जाता है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, आप कोई अपनी उसमें इंटरवेंशन करते हो जिसकी वजह से आपको लगता है कि किसी चीज़ की क्वालिटी बेहतर हो सकती है। अलॉन्ग विद दैट रिसर्चेज में अगेन यूके वाले रिसर्चेज को बहुत वैल्यू करते हैं, ट्राई टू टेक पार्ट इन रिसर्चेज। अगेन एज अ फर्स्ट ऑथर अगर आप नहीं कर सकते तो यू कैन ट्राई टू बी अ सेकंड ऑथर, थर्ड ऑथर, कोई भी रोल है, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस है, डेटा गैदरिंग है, मैन्यूस्क्रिप्ट राइटिंग है, किसी भी पार्ट में आप थोड़ा बहुत अपना रोल प्ले करो तो आप उसे सीवी में प्रेजेंट कर सकते हो। कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स हो गया जिसमें आप डिस्टिंक्टिवली अच्छे हो, उसको परस्यू करो। कोई सोसाइटी का पार्ट हो, डिबेटिंग सोसाइटी है, अगेन कोई भी चीज़ जिसमें आप स्टैंड आउट कर सको, जो आप सीवी में डाल सको। और लीडरशिप रोल्स परमानेंट हो सकते हैं जिस तरह क्लास रिप्रेजेंटेटिव, टेम्परेरी हो सकते हैं जिस तरह कोई इवेंट आ रहा है उसमें आपने ले लिया लीडरशिप रोल, कोई फाइनेंस के हेड बन गए, कोई आप कोऑर्डिनेटर बन गए किसी भी चीज़ के, कोई अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया। वो ये चीज़ें बहुत देखते हैं यूके वाले, सिर्फ आपके एग्जाम्स नहीं देखते, वो आपके ओवरऑल सीवी देखते हैं कि इसने अपार्ट फ्रॉम एग्जाम्स क्या किया, क्योंकि एग्जाम सब ने क्लियर किए होते हैं, नंबर इसमें किसी के डिस्क्लोज नहीं होते हैं, सबका पास फेल होता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लैब एग्जाम्स ऑल्दो उन्हें अभी भी प्लैब ही कहेंगे, लेकिन उनका जो कंटेंट है वो चेंज हो रहा है एज पर एमएलए कंटेंट, जो कि यूके के स्टूडेंट्स अब देना शुरू हो रहे हैं। इसकी आप लोगों को इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आप यूज़ करते हो लर्निंग रिसोर्स अपने प्लैब के लिए, प्लैबेबल हो गया, मेड रिवीजन, जो भी ये है, वो अपना कंटेंट ऑटोमेटिकली अपडेट करते हैं फॉर द एग्ज़ाम्स। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि 8 अगस्त 2024 के बाद और 17 मई 2024 के बाद प्लैब 1 और प्लैब 2 का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब now you're at the end of your final year, what to do now? Basically you start with making a GMC account. आप ऑनलाइन जाते हो जीएमसी ऑनलाइन पे, वहाँ पे अपना ऑनलाइन अकाउंट स्टार्ट करते हो। इसके लिए जो एक चीज़ है जो ग्रेजुएशन से पहले करना ही मुश्किल होता है, लोग नहीं बना सकते, वो आपकी एमबीबीएस डिग्री वहाँ अपलोड करनी होती है। तो आप वहाँ एमबीबीएस डिग्री अपलोड करते हो और अपना जीएमसी अकाउंट अप एंड रनिंग करो एज सून एज पॉसिबल आफ्टर ग्रेजुएशन। देन फ्रॉम देयर नेक्स्ट स्टेप है आपका आइल्स देना। आइल्स आपने कब देना है? कोशिश करो इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन, या फिर अगर आपने नज़र रखी हुई है प्लैब की डेट्स पे तो आपने विद 3 महीने या 4 महीने पहले दे दो प्लैब डेट्स ओपन होने से, ताकि आपके पास टाइम हो कि एग्जाम का रिजल्ट भी आ जाए, आप तैयारी भी कर सको, और इन केस आपका फेल होता है तो आप दोबारा भी दे सको। क्योंकि आपको प्लैब 1 बुक कराने के लिए अपना आइल्स का जो रिजल्ट है वो अपलोड करना पड़ता है जीएमसी में,
और उसकी भी लिमिट होती है कि 15 डेज पहले करना होता है, ये नहीं कि आखिरी दिन आप बैठ के अपलोड कर रहे हो। इसमें अगेन दोनों ऑप्शंस हैं, आईएलटीएस और ओईटी है, डिपेंडिंग ऑन आप कितने कंफर्टेबल हो अपनी इंग्लिश में, आप आईएलटीएस दे सकते हो या ओईटी। मैंने आईएलटीएस दिया था तो मैं उसी के बारे में कमेंट कर सकता हूँ। उसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट है फॉर बुकिंग द एग्ज़ाम, आपका मिनिमम स्कोर 4 बैंड्स होते हैं, 4 या सब्जेक्ट्स कह लो, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। हर एक में मिनिमम आपका बैंड आना चाहिए 7 और ओवरऑल मिनिमम आना चाहिए 7.5। अगर इससे आपका काम आता है तो आप प्लैब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, पहली बात। इसमें भी अक्सर लोग जहाँ पे फंबल करते हैं या जहाँ पे वो लैग करते हैं वो राइटिंग के कंपोनेंट में होता है, और अक्सर उसमें 6.5 आ जाता है। तो एकेडमी अगर ज्वाइन करनी है, यू फील लाइक आपकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो डू सो, क्योंकि आपको राइटिंग की वजह से वरना सारा एग्जाम दोबारा देना पड़ता है और फिर कॉस्ट वहीं चली जाती है, टाइम भी ज़ाया होता है। फिर जब आपका आइट्स क्लियर हो गया, मिनिमम 7 बैंड इंडिविजुअली और ओवरऑल 7.5 से ज़्यादा आ गया, तब आपके आएगा टाइम जीएमसी के लिए एग्ज़ाम बुक करने का। तो साल में आजकल जीएमसी 2 दफ़ा रिलीज़ कर रहा है डेट्स, ये अगेन वो चेंज करते रहते हैं, कभी साल में 1 दफ़ा करते हैं, कभी ज़्यादा दफ़ा करते हैं। जो मोस्ट रिसेंट था वो साल में 2 दफ़ा कर रहे थे। साल में 2 दफ़ा करते हैं और 4 सेशंस होते हैं टोटल प्लैब के। इस साल के सेशंस मैं बता दूंगा लेकिन वो ऑलरेडी बुकड हैं, उससे लेकिन आइडिया हो जाएगा कब होते हैं। तो अभी जो मोस्ट लाइकली सीट्स रिलीज होंगी वो अगले साल के सेशंस की होंगी, मोस्ट लाइकली अगले साल के अगस्त और नवंबर सेशंस की। तो इसी से अंदाज़ा लगा लो कि अगर आप सब कुछ तैयार करके अपने ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद भी सब कुछ लेके बैठ जाओ, तो प्लैब 1 की डेट मिलते मिलते ही आपको 1.5 ईयर 1 ईयर लग सकता है। ऐसा हो सकता है आपकी हाउस जॉब के भी बाद की आपको डेट मिले, और ये वेरी प्लॉजिबल है। नेक्स्ट आपने एग्ज़ाम बुक करना है, वो इन इटसेल्फ काफ़ी बड़ी हेडेक होता है। आपके पास सीट्स खुलने के बाद फ्यू सेकंड्स होते हैं एग्ज़ाम बुक करने के लिए। आजकल उन्होंने क्यू सिस्टम डाला है तो थोड़ा बेहतर हो गया है, लेकिन उसमें भी टाइम शॉर्ट ही होता है, और ज़रूरी नहीं है आपको इस्लामाबाद की सीट मिले, लोगों को कराची की मिलती है, लोग दुबई भी जाके देते हैं, ये अगेन आप पे डिपेंड करता है। अगर फाइनेंसेस हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि सीट लेट वाली ना लो, जो अर्लीस्ट मिलती है, चाहे दुबई की मिलती है, चाहे आपको कहीं और की मिलती है, वो बुक करवा लो और अपना एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी दो, क्योंकि ये आपका टाइम ज़ाया हो रहा है। ये इस साल की डेट्स हैं। एग्ज़ाम डेट्स जो इस साल थी वो फ़ेब थी, मई थी, अगस्त थी, नवंबर थी, और हर साल इन्हीं महीनों में आपके मोर लेस 3-4 दिन आगे पीछे कर लो तो डेट्स आती हैं। 2025 की भी यही होंगी, फ़ेब सेशन, मई सेशन, अगस्त और नवंबर सेशन। अभी मोस्ट लाइकली अगस्त और नवंबर सेशन ओपन होगा। अच्छा, वंस यू बुक योर एग्ज़ाम, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप उसकी प्रिपरेशन है। आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट 3 मंथ्स की प्रिपरेशन टाइम रखो। इसमें मल्टीपल रिसोर्सेज हैं। मोस्ट जो कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो सारे मोरलेस यूज़ करते हैं, वो प्लेबेबल ही है। जो इसकी 5 मंथ की सब्सक्रिप्शन है 25 पाउंड्स की होती है, और जो आपका एम होना चाहिए वो एटलीस्ट 2 कंप्लीट पासेस ऑफ प्लेबेबल होना चाहिए, या 1.7 टाइम्स, 1.8 टाइम्स आपने किया हो। और इसका तरीका यही है कि अपना एम रखो कि विद इन के 60 टू 80 क्वेश्चंस पर डे टारगेट रखो। यूजुअली लोगों को विद हाउस जॉब करना पड़ता है, अगर उनकी डेट इस तरह है या किसी और जॉब के साथ, तो आपको थोड़ा प्रोएक्टिव रहना पड़ता है। लेकिन 60 टू 80, अगर आपको लगता है इससे पेस स्लो है, आप 40 करोगे, तो 4 मंथ्स का प्रेप टाइम रख लो। अराउंड इसके 33-3500 क्वेश्चंस हैं। 3 मंथ्स पहले आपने स्टार्ट कर ली, फिर 1 मंथ बिफोर द एग्जाम इस पॉइंट तक आपका फर्स्ट पास जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। एज इन आप सिस्टेमिक एक दफ़ा अच्छी तरह पूरा जो क्वेश्चन बैंक है ख़त्म कर चुके हो। अब आपके पास रह गए हैं 4 वीक्स। यही जो प्लेबेबल है, इसका जो क्वेश्चन बैंक है वो उसे रीऑर्गेनाइज करके, शफल करके एज मॉक्स बना के देते हैं। तो ये आप मॉक एग्जाम्स 15 to 16 कर सकते हो। कंप्लीट मॉक होता है एक्चुअल एग्जाम जितना। तो 180 आपके ये क्वेश्चंस का मॉक बनाता है। तो 180 क्वेश्चंस का जो मॉक है, आप इसको तकरीबन 16 बनते हैं अगर पूरे क्वेश्चन बैंक को डिवाइड करो। तो आपका एम होना चाहिए कि हर दिन या हर 2 दिन में एक मॉक कंप्लीट करके रिव्यू कर लो जो आपके इनकरेक्ट्स हैं।
तो आपके तकरीबन 3 वीक्स ये मॉक्स करने में, रिव्यू करने में, अपने आप को इम्प्रूव करने में लग जाएंगे। और एक जनरल आइडिया अगर अपने आप को देना है तो अगर अराउंड 80%, 85% आपके एक मॉक में आ रहे हैं तो दैट इज़ गुड इनफ फॉर प्लैब 1। फिर जो आपका फाइनल वीक आता है एग्ज़ाम का, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अपने जो इनकरेक्ट्स हैं या जो टॉपिक बहुत ज़्यादा आपके गलत हुए हैं, उनको एक दफ़ा रिव्यू करो। और इनके एक बिग मॉक्स होते हैं, ऑफलाइन मिल जाते हैं, कोई इतना मसला नहीं होता है। तो वो बिग मॉक्स में न्यू क्वेश्चंस होते हैं, तो एक दफ़ा टाइम करके वो भी कोशिश करो कि आप लास्ट वीक में कर लो, उससे एक अच्छा आइडिया हो जाता है कि तैयारी कैसी है। प्लैब 1 प्रेप में थिंग्स दैट आर वर्थ अवॉइडिंग, डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन रिवाइजिंग द कोर्स कंटेंट। अभी कोई फ़ायदा नहीं है कि कोई बुक खोल के बैठ जाओ कि मैंने अभी पैथोलॉजी सारी रिवाइज़ करनी है, या मैंने क्लिनिकल मेडिसिन की है जो पॉकेट बुक है इसको रिवाइज़ करूँगा फिर मैं प्रिपरेशन, दैट इज़ यूज़लेस। डायरेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। इसके अलावा देयर इज़ नो नीड टू एक्सप्लोर एनी अदर क्वेश्चन बैंक, प्लेबेबल इज़ मोर देन इनफ। मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ हु हैव फॉलोड प्लेबेबल, उन्होंने इजी 20 मार्क्स 30 मार्क्स के मार्जिन से क्लियर किया हुआ है प्लैब 1। उसके अलावा मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फुल लेंथ मॉक एक तो आपको रैंडमाइज करके देता है, तो आपको अच्छा आइडिया होता है आपकी तैयारी कैसी है। दूसरा, आपके टाइमिंग में आपको हेल्प करता है कि आप 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चंस कर भी सकते हो या नहीं कर सकते। तो मॉक्स में कुछ स्किप नहीं करना। ऑल्सो डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन मेकिंग नोट्स। क्वेश्चन किया है उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ो, उस वक्त जितनी याद होती है कर लो, लेकिन उसे बैठ के लिखना, उसके नोट्स बनाना, दैट विल वेस्ट टाइम। आप कभी भी दिन में 60 क्वेश्चंस 80 क्वेश्चंस नहीं कर सकोगे अगर आप नोट्स की तरफ जाते हो। तो जस्ट डू द क्वेश्चन बैंक, ऑनलाइन करो, उधर ही एक्सप्लेनेशन पढ़ो, उसे जितनी उस वक्त याद रहती है कर लो और अगले क्वेश्चन पे चलो। अच्छा, एग्ज़ाम डे और जो एग्ज़ाम इटसेल्फ है, तो जो प्लैब 1 एग्ज़ाम है वो 180 एमसीक्यूज़ होते हैं। आपके पास 180 मिनट्स या 3 आवर्स होते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा पिटफॉल होता है वो टाइमिंग का होता है। तो बिफोर लीविंग फॉर द एग्ज़ाम अपनी आईडी डॉक्यूमेंट सारी चेक कर लो, पासपोर्ट चाहिए होता है या आईडी कार्ड भी चल जाता है। उसके अलावा प्लैब 1 फेयरली ईज़ी एग्ज़ाम है, देयर इज़ नो नीड टू स्ट्रेस अबाउट इट। इसका जो पिछले साल का पास रेट था फर्स्ट अटेम्प्ट का 70% था, तो अगर आपकी डिसेंट तैयारी भी है ईज़िली पास हो जाता है। जो पासिंग स्कोर होता है वो कर्व पे ग्रेडेड होता है। लेकिन 180 में से रफ़ली आपके 115, 120 आ जाएँ तो वो एक सेफ ज़ोन है। क्योंकि यूजुअली पासिंग यही होता है 111, 110, 19, बहुत हाई चला गया तो 113। ये सारे स्टैटिस्टिक्स आपको मिल जाते हैं ऑनलाइन के पिछले सालों का क्या पास रेट था, किस स्कोर पे लोग पास हुए थे, मीडियन स्कोर क्या था। उसके अलावा एग्ज़ाम टिप इटसेल्फ जो मैं दूँगा कि डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन एमसीक्यूज़, क्योंकि आपके जो प्लैब 1 में सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होती है वो मुझे टाइमिंग लगी थी कि 1 मिनट 1 एमसीक्यू लोग नहीं कर सकते, वो कंप्लेसेंट हो जाते हैं, एक एमसीक्यू पे फँस जाते हैं, बहुत देर सोचते हैं और एंड में ऑन एवरेज 10 से 15 एमसीक्यूज़ या फिर रह जाते हैं या तुक्के मारने पड़ते हैं, बगैर पढ़े आपको करने पड़ते हैं। तो व्हेन यू डू द क्वेश्चन जस्ट हैव अ क्विक ग्लांस एट इट, अगर आता है टिक करके मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगर थोड़ा-सा डाउट है तो उसको क्वेश्चन सर्कल करो एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, और इस तरह करते-करते फर्स्ट पास अपना एटलीस्ट कंप्लीट कर लो। तो जब सेकंड पास पे आओगे फिर जो क्वेश्चंस का 2 में डाउट है पहले वो करो, फिर जो 3 में डाउट है वो करो, और फिर फाइनली जिनका कोई आइडिया नहीं उनके जो भी तुक्के मारने हैं। गुड पेस इज़ अगर आप 25 मिनट्स में 30 एमसीक्यूज़ के लिए एम करो कि एवरी 30 मिनट्स अपने 5 मिनट्स बचाने की कोशिश करो एंड के लिए। क्योंकि आपको ये एंड में चाहिए होगा टाइम, रिव्यू करने के लिए चाहिए होगा, आपको ये शीट भरने के लिए चाहिए हो सकता है क्योंकि प्लैब 1 कंप्यूटर पे नहीं होता है। आपको ओएमआर शीट भरनी पड़ती है, उसमें इटसेल्फ 5 मिनट्स लग जाते हैं, 10 मिनट्स लग जाते हैं। उसे आपने डबल चेक करना है, अपना नेम वो सब कुछ डबल चेक करना है। तो डू गिव योरसेल्फ अबाउट 15 मिनट्स इन द एंड सारा कंसोलिडेट करने के लिए, और इसके लिए यही होगा अगर आप शुरू से अपना पेस एमसीक्यूज़ का तेज़ रखो। और अगेन प्लैब 1 इज़ ए वेरी ईज़ी एग्ज़ाम, तो वहाँ पे कोई ट्रिक क्वेश्चंस नहीं होते हैं। अगर 3-4 बज़वर्ड्स नज़र आ गए हैं तो ये वही कंडीशन है। तो जब आप प्रेप भी करते हो तो लुक आउट फॉर द बज़वर्ड्स, लुक आउट फॉर थिंग्स दैट स्टैंड आउट किसी एक क्लिनिकल कंडीशन में, और बस एग्ज़ाम में जाके क्वेश्चंस स्किम करके आप वही चीज़ पे फ़ोकस करो। एंड अगेन फाइनली यहाँ भी मैंने ये चीज़ रिपीट की है कि
डू नॉट बी फूल्ड बाय आपकी जो पेस है मॉक्स में, क्योंकि वो बहुत तेज़ होगी। मैंने पर्सनली खुद अपने जो मॉक्स थे 2 आवर्स 2.5 आवर्स में आराम से कंप्लीट किए थे, लेकिन फिर जब मैं एग्ज़ाम में गया था मेरे पास एंड में टाइम ख़त्म हो गया था और मेरे 5-6 एमसीक्यूज़ रह गए थे। तो आप मॉक्स बहुत तेज़ करते हो एज़ कम्पेयर टू जो एक्चुअल एग्ज़ाम है। तो डू नॉट बी फूल्ड बाय योर पेस जो मॉक्स में है, अपनी जो पेस एग्ज़ाम पे है उस पे फ़ोकस करना है। फिर फाइनली व्हेन यू आर डन विद योर प्लैब 1, फिर आपने अपना प्लैब 2 बुक करना है, सिर्फ मैनचेस्टर में होता है। प्लैब 2 के बारे में अब वो जो दूसरे स्पीकर है वो आपको ज़्यादा डिटेल देंगे, लेकिन इसकी बुकिंग में मैं यही सिर्फ बताऊँगा कि कोशिश करो कि 3-4 लोग मिल के बुक करो, उससे आपको फाइनेंसेस में बहुत फ़र्क पड़ेगा, प्रेप पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, मॉरल सपोर्ट मिल जाती है और इसकी आप प्रिपरेशन ऑनलाइन कर सकते हो। दैट्स इट फॉर मी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। Okay, thank you so much, Dr. Saad Afzal, for such a detailed and informative session. I hope everyone found it clear and insightful. However, if you're having any queries, just text it over here in the box and I would be conveying this to Dr. Saad. Just type in and I will be asking Dr. Saad for this. Okay, we have a question over here. That is, where is CREST form required? Does everyone needs to get it? Dr. Saad, if you can answer this. श्योर। ट्रस्ट फॉर्म बेसिकली एक फॉर्म है यूके का, जो आपने साइन करवाना होता है, आपको ऑनलाइन मिल जाता है, उसमें कोई मसला नहीं होता है। अ, ये फॉर्म बेसिकली डिक्टेट करता है कि आप इक्विवेलेंट टू एन FY2 ट्रेनी इन द यूके हो। जो यूके में है उधर एक हाउस जॉब नहीं है, ऐसे समझ लो कि वहाँ हाउस जॉब ईयर 1 है, ईयर 2 है। हम जो करते हैं ईयर 1 के इक्विवेलेंट करते हैं, जिसे वो FY1 कहते हैं। थ्योरेटिकली अब हम उनके सिस्टम में FY1 के बाद जा रहे हैं, तो हमें भी FY2 पूरा करना चाहिए उनके इक्विवेलेंट आने के लिए। तो ये जो FY2 के हम इक्विवेलेंट वाले सारी चीज़ करते हैं, इसका फॉर्म होता है क्रेस्ट फॉर्म। लेकिन उनकी थोड़ी रिलैक्सेशन है कि वो ये नहीं कहते आप पूरा FY2 12 मंथ्स का करो, फिर हम साइन करेंगे। आप एज़ अर्ली एज़ 3 मंथ्स के बाद भी करवा सकते हो ये फॉर्म साइन, ये यूके से ही साइन होता है। और दूसरा ये है कि आप पाकिस्तान से भी साइन करवा सकते हो, बस वो थोड़ा प्रोसेस ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसके लिए क्रेस्ट के लिए आपको यूके में या यूके के डॉक्टर का साइन ज़रूरी नहीं है। किसी भी गवर्निंग बॉडी, यहाँ की PMDC है, वहाँ का लाइसेंस्ड बंदा है, तो वो साइन कर सकता है ये। Okay, thank you, Dr. Saad. We have another question that what specific things are required to build a CV at FY2 level? अच्छा, तो बेसिकली डिपेंडिंग ऑन आप किस चीज़ में आगे अप्लाई करना चाह रहे हो, आपको CV उस हिसाब से बिल्ड करनी पड़ती है। उसे यूके में पोर्टफोलियो कहते हैं वो। हर स्पेशलिटी का अपना पोर्टफोलियो होता है। जनरल सर्जरी का अपना पोर्टफोलियो है, मेडिसिन का अपना है, रेडियोलॉजी का अपना है, इमरजेंसी मेडिसिन का अपना है। मोर और लेस सब में सिमिलर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन थोड़ी-थोड़ी डिफरेंसेस है। ये पोर्टफोलियो ऑनलाइन अवेलेबल होता है। जिसका भी आपको चाहिए हो, अगर आप लिखो कि पोर्टफोलियो फॉर जनरल सर्जरी ट्रेनिंग NHS या यूके, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन जनरली स्पीकिंग जो उसमें स्कोरिंग सिस्टम होता है तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्कोर है ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड मुझे याद आ रहा है, आपको चाहिए होता है टीचिंग एक्सपीरियंस, उसके पॉइंट्स होते हैं, टीचिंग डिप्लोमा के पॉइंट्स होते हैं, ऑडिट्स के बहुत ज़्यादा पॉइंट होते हैं, रिसर्चेस के बहुत ज़्यादा पॉइंट होते हैं, नेशनल प्रेजेंटेशंस के बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, फिर रॉयल एग्जाम्स के पॉइंट्स होते हैं, MRCP1, MRCP2, MRCS1, इस तरह की चीज़ों के इनके पॉइंट्स होते हैं।
और डिस्टिंक्शन कोई आई है उसके थोड़े बहुत पॉइंट्स होते हैं। Okay, thank you so much, Dr. Saad, for answering all these questions. And now we will be moving forward towards our second speaker, that is Dr. Syed Naqvi Abbas. He is a graduate of Multan Medical and Dental College. He is currently a resident in urology, having cleared both PLAB 1 as well as PLAB 2 exams, and he is GMC registered and has also completed his MRCSA. So let's welcome him. Hello everyone. I hope everyone can hear me. I would request the host to please make me co-host so I can share the PowerPoint. And please let me know if you guys can hear me. Okay, so hello everyone. First of all, I would like to thank everyone that you guys invited me here for this, and it's really good to see that you guys are creating such activities because when I was in my final year, fourth year previous students, we didn't have such opportunities. So it is a great thing that you guys are starting these activities like in the best time. So Dr. Saad has given a wonderful presentation. He has covered almost everything. So I would try to be more interactive, and I'll be answering your questions. I noted down some questions that you guys asked. So I'll be starting with answering after answering those questions. Just give me a moment. Okay, so there were a few questions that were asked during the first presentations, and two or three of those questions were answered by Dr. Saad. So I'll be answering the further questions that some of the participants asked. So one question was that does everybody requires a CREST form? So basically, if you're applying for a junior level job right after your internship, that is FY1. So you don't need a CREST form, and it is basically required that, for example, if you are applying for a training in the NHS and you have experience of more than 2 years after your house job, and you need to prove to the training services that you are competent enough, so you need to get a CREST form signed. It is available on the NHS site, so they update it quite often. So the base you can get it signed from everyone, as Dr. Saad mentioned, and the minimum requirement is that some consultant must sign it with whom you have worked at least for a period of 3 months. So any consultant that you have worked with for 3 months can sign a CREST form. And one of the participants asked that is FY the foundation year is compulsory for PLAB examination. So yes, for PLAB examination, to complete the whole process for PLAB 2 and to get the GMC registration, the house job is compulsory. Okay, so that was another question. And the other question was that what are the things required to build CV for the NHS? So I'll be answering this during my presentation as well. Dr. Saad has covered a few points regarding clinical audits and quality improvement program.
And one participant asked can we get into the private healthcare system in UK? So yes, we can get a private healthcare system in UK, but it is quite a challenge these days because private healthcare system and the agencies, they can't hire anyone from Pakistan directly, even if you are GMC registered, because Pakistan comes in the red area zone and no agency can hire us directly. So you can either get into uh, one of the service which is called NES. Okay, so this is a private healthcare system which mostly hire people with experience in surgery. So that's one of the option. Or if you have some references, you can also enter in private system, but they mostly uh, uh, hire people that are already living in the UK. So another question was, somebody asked that can we give PLAB and then MRCP? So yes, this is the best thing. You can, if you can manage your expenses and you can manage your time. So yes, it's a good thing that you give your PLAB exam and then you start your Royal College exam, whatever specialty that you prefer. If you like surgery, you can give the MRCS party exam. And if you like medicine, you can start with MRCP as well. And the other thing was, Dr. Saad mentioned the exchange program. So exchange program is basically that if you are doing residency in Pakistan in FCPS, after 2 years, there are two basic requirements. First is that you need to clear your intermediate modular exam that comes after 2 years of your training. And you also need to clear English exam. You can either give OET or you can give IELTS exam. So these are the two requirements, but the competition is quite high. So you cannot only depend upon this pathway. Okay, so the difficulty level. Okay, I'll be covering all the questions. Let me start with the presentation. Please, I would try to cover my presentation in like 10 to 15 minutes, and then I'll be giving you more time for the questions. I'll try to be more interactive because you guys have already listened to a presentation and the concentration might be getting to a minimal level now. So I'll just start my presentation. And the first thing that I would mention is that if you guys are already in fourth year or the final year, so no postgraduate exam is tough. If you guys can clear fourth year exam or final year exam, you can clear every postgraduate exam. So you don't need to plan your things by thinking that this exam is tough and I cannot give it. Everybody can give any exam if you just do some proper planning and if you do some start study. There is some smart study. Okay, so I am currently doing residency. I am GMC registered and I got my registration in this January. I applied for like around 200 jobs. I got a job offer for clinical research fellow in urology in Scotland, but currently I'm not pursuing it because I want to complete my residency in Pakistan. So this is one thing that I'll be mentioning at the end, that for the if you guys are doing the PLAB pathway, you need to keep your options open. So I'll be covering PLAB 2 exam. Dr. Saad has covered most of the things regarding the English exam, the PLAB 1 exam, how to clear it, how to prepare for it. So I'll be focusing on PLAB 2 exam and that what are the things that you need to do. So the best time to start for the PLAB preparation is right after you start your house job. Like if you are in second year or if you are in second month or third month of your house job, it's the best time that you book your English exam. You can book either OET, I give OET exam, and you can give either IELTS as well. Okay, so I'll be answering this question as well. I would just request that you guys keep your questions for the end, and I would be very happy to answer each and every question. Okay, so the best time to book your exam is, like I said, second or third month of your house job. You give your English exam. You need like 1 month, a maximum 1 or 1.5 months for this exam.
You can clear it quite easily. OET specifically is comparatively an easier exam because it involves all the medical things, even the listening part, the reading part, and the speaking part. It is all related to the medicine, so it becomes quite easy for us to understand the basic things. So I would prefer that if you guys are less confident about your English speaking skills, OET is the better option for you. Okay, and it is a doable exam. The next thing that I would recommend you guys is that if you guys have initially made up your mind that you guys are going to appear for PLAB 2, the best time for that is that you keep your last rotation of your house job is comparatively an easier rotation. Like you can choose dermatology, you can choose radiology, and any other field like psychiatry in which you have less workload, so you can study for your exam. So these are the basic thing that I would recommend to all the final year students that are here. Okay. The next thing is how to prepare for PLAB 2 exam. So the PLAB 2 exam, it is like Dr. Saad mentioned, it is basically a OSCE exam in which you will be given 16 stations. There are different kind of stations. Most of the stations, like 8 to 10 hours, the stations in which you will be presented with a scenario that a patient has presented to you in the outdoor or in the emergency department, and you have to talk to the patient. You will take the history, and you will establish a diagnosis, and an examiner will be sitting in the room to judge that how well you are able to communicate with the patients that are coming to NHS. Okay, so this is the basic pattern of the PLAB 2 exam. So 8 to 10 stations, they cover a basic conversation between a doctor and the patient, where you will be basically acting as a junior doctor working in the NHS. The other stations, a few stations are in which they will present you SYNCH station, in which they will provide you with a remote and some emergency scenario. That, for example, a patient has presented with some emergency, you need to manage it. So these are the things that you will learn during your house job. For example, a patient has come to the emergency department and he is unconscious. So you will act that how are you going to manage that patient. So these things might sound overwhelming, but once you are in your house job, so these are the things that you can easily cover. Okay, and the difficulty level of exam, I would say that this is a doable exam, and every person that who is working sincerely in Pakistan, he can easily clear this exam. This is basically exam of nerves. You need to stay confident because you will be in Manchester. You will be out of the country. That you will have some pressure in your mind that you have spent a lot of money on this exam. So these are the things that you need to manage. So you need to be confident on the day of the exam. Selection of academy. There are different kind of academies in the UK, and there is always a changing trend. One is Samson, one is Common Station. I chose the academy that was Moshobi Academy, that most of the Asians nowadays prefer. And when do you need to go to UK for the exam? So the best time, like Dr. Saad mentioned, is that you go there at least by keeping a gap of 1 month period, and that would be sufficient. But when you are going to the UK, it is better that you that you do some preparation back home, so it becomes easy for you. Estimate cost of PLAB 2 exam. So Dr. Saad has break down most of the cost that you guys need to know. But I'll mention some things that are important. So the visa fee. So because the PLAB 2 exam. Okay. So okay, I'll answer this question right now. Yes, there are a few academies in. Yeah, I joined the academy that was Moshobi, Moshhoby. It's an Egyptian name, so you can easily search it on the internet or on the
book group, you will easily find the person. Okay. And there are a few academies in Pakistan, one with the name of Friends Academy. But the best way is that you join some academy. They will first teach you online. You will attend their sessions online for like 1 month, and then 1 month before the exam, you need to go to UK. It depends upon how much confident you are. I've also seen persons that reach UK just a week before or two before their exam, and they also clear the exam. But it is somewhat risky, so I would suggest that you go at least 4 weeks before. So I went for my exam for 1 month. I had to return back home because I couldn't get more holidays because I was doing my training. But if you have sufficient time and resources, I would suggest that when you go for your PLAB 2 exam, you cover all the important things. For example, that first of all, you give your PLAB 2 exam. Then you can, it's better that before going to UK, you apply for some clinical attachment. And you need to start applying for it like 4 to 5 months before going to UK, because the saturation level is quite high there, and it requires a lot of reference and effort to get a clinical attachment in UK these days. Okay, so I'll just quickly cover the estimate cost of PLAB 2 exam. So the visa fee. Okay, so I would, like I said, that I would be very happy if you guys keep these questions for the end, and I would try to cover this presentation in 10 minutes, and then I'll be answering all of your questions. Okay, so the visa fee, it is around about 40 to 50,000 PKR when you apply for the UK. So this is the first thing. Then is the return ticket. The best way is that if you do some good planning. For example, if you get a ticket 5 or 4 months before going to the UK, you can get it quite a reasonable price, and it also depends that in which time period you are going. For example, if your exam is in January or February, the return ticket might cost you like 4 lakhs. And if you are going in some off period, you can get it for 2 lakhs as well. I got the return ticket for around about 2 lakh 21,000. And my colleague who went 2 months after me, he got the ticket for 3 lakh 90,000. So smart planning also plays a very important role when you're going for the PLAB 2 exam. Okay, so the PLAB 2 fee currently is 995 pounds. And if you're staying in an academy and in any accommodation, so any reasonable accommodation would cost you around 25 pounds per day. Okay, so if you're staying for like 30 days, it would cost you around 750 pounds. And for the academy fee, there are different kind of academy charges. I chose the Mushobi Academy, in which I chose the silver package, and it costed me around 350 pounds. There are some other academies that could cost 500 to 600 pounds as well. So it varies with the every academy. You need to keep like 200 to 250 pounds for your grocery and everything when you are in UK, and 500 pounds if you are doing a clinical attachment. They would charge you nearly 150 pounds for the basic health checkup, even if you are getting the attachment for free. Okay, and the one important thing is ALS course. So ALS course is it costs you around 550 to 600 pounds, and this is the best thing that you can do when you are going for your PLAB 2 exam. When I went there, I didn't I wasn't able to do any clinical attachment or any ALS course, because like I said that I didn't have time for that. But if you guys are doing and you don't have any commitment back home, and if you have resources, so I would highly recommend that if you are taking the PLAB 2 route and if you go to UK, then please do a clinical attachment and do ALS course as well. This is the most important thing. This is important than electives that you are doing back home, or clinical electives, or anything that you're doing back home.
is less important as compared to clinical attachment in NHS and the ALS. Okay, so what to do on exam day? So like I've seen that most of you guys are fourth year student and final year students. So I feel that this is the less important thing for you, because first you need, this is the best time for to do planning. I don't want things to get quite overwhelming for you that you suddenly jump to the PLAB 2 day, that what are you going to do when you are preparing for PLAB 2, because you need to take baby steps. First plan that what you are going to do, and we'll be having a discussion in the end on that. So essentials for future in UK. So clinical experience, they prefer that you are clinically experienced. So the reason I got the job offer, you will see a lot of people that nowadays they will tell you that they have applied for 800 jobs or 900 jobs and they didn't get an interview. So the reason I got the job interview, because I had the training experience. I didn't kept the PLAB my only option. I did MRCS-A along with my PLAB. I cleared my FCPS-1 and I started training straight away, although I was offered a better paid job being a medical officer. So I would suggest that even if you are doing, if you are planning for a UK pathway, it is better that if you start a training program, because they highly prefer people who are doing a clinical, who are doing a residency. The next thing is teaching experience. So right after they have there are two kinds of teaching experience. One is formal teaching experience and the other is informal teaching experience. Informal teaching experience is something that we are doing on everyday basis. For example, if you are a final year student and you are teaching any of your junior, like someone who is studying in fourth year, so this is informal teaching. Or if you are in ward and you are teaching someone how to do bedside examination, so this is informal teaching experience. So you guys are already moving toward the informal teaching experience. And the formal teaching experience is you can work as a demonstrator. I worked as a demonstrator for 6 months in Department of Physiology. Clinical attachment, like I said, that if you go into UK, this is the best thing that you can do. The next thing is ALS courses. I have mentioned already. The next important thing is quality improvement program and clinical audit. So this is the thing that is the most important for everyone who is going to start his house job. So this is the easiest part that you can do, and this would improve your CV a lot. I gave 2 interviews, and in both interviews they asked me the question that what is your knowledge about the clinical audit and quality improvement program. So this is very easy thing, and if we had further time, I would share my quality improvement program that I did 2 weeks back, and I didn't knew about this even when I got my GMC registration. So this is very easy thing. For example, the quality improvement don't need any ethical approval for it. You don't need to inform anyone. You just need to see that what deficiencies are being in your clinical practice, and you just need to put suggestions that how you can improve this. In clinical audit, you will compare your practices with some standard, and then you will implement change. These are the things that we have read in the community medicine in fourth year, but no one guided us that how can we practically do this. So for the final year students that are stepping into their house job, I would really encourage them that they just type on the YouTube that what is a quality improvement program, what is a clinical audit, and you will find how you can do this. Please try to get 3 to 4 quality improvement programs while you are in your house job. This would improve your CV a lot. So Royal College exams. So there are different kind of Royal College exams. The PLAB is basically a licensing exam. If you're lucky enough, you might get a job quickly. But nowadays, the competition is getting quite tough. So everyone recommends that it is better that after you get your GMC registration, it is better that you give at least part A of any of the Royal College exam that you like. For example, if you want to do training in medicine, you can give MRCP
or if you want to do training in surgery, you can give MRCS, MRCM, and MRCOG. Current condition in UK. Okay, so most of the people ask that what is the current situation, and even the questions that you guys are asking, it clearly shows that you already have an idea that the situation in UK is quite bad these days. Okay, so the situation is bad everywhere, to be honest. So it gets difficult for everyone, even if you are doing USMLE, even if you are doing any kind of exam. So you just need to outshine yourself. You need to improve your CV, and if your CV is great, you can get any job. So the job situation is very tough in UK these days, and the competition is very tough, but if you do the right steps, you can get a job quite quickly as well. I would like to give example of my junior. He got detained in his fourth year, and then he focused on his exams, and he cleared his English exam while he was in third year of his internship or house job. He gave his PLAB 1 when he was in the 10th month of his house job. And right after completing his house job, after a couple of months, he went to the UK. He gave his PLAB 2 exam. He was lucky to clear it with with a margin of one station. And he did a clinical attachment for 2 months, and the luck favored him, and he didn't apply for any job. And the trust that he did clinical attachment, they asked him that they want to hire him if he is available. And so in 15 to 16 months, in during which he cleared his he completed his house job, he completed his English exam, PLAB 1 and PLAB 2. He's currently working as a junior doctor in UK. So if you take the right steps, you can be working in NHS in a couple of years as well. Career opportunities after working in NHS, and the best months to apply. So this is if you get your GMC registration, and the best months to apply for are in May and June, and in sometimes in January and February, because most of the people, they leave their jobs, they leave their junior level jobs for training, and new opportunities are coming. Okay, and career opportunities after working in NHS. So if you have experience of working in UK, it would improve your CV a lot. Nowadays, what people are doing, that they do PLAB 2. They work in NHS for 1 year, and then they are moving to Australia or New Zealand, because the pay packages are better there. So these are few opportunities that you can think about after working in the NHS. And if you want to do training, so you need to improve your CV, and after working for as a junior doctor for a couple of years, you can start with training there as well. Opinion of doctors already working in NHS. So the junior level doctors, they, to be honest, they are not very happy at the moment, because the uh, money coming out of their job is not very good. The taxation is quite high. So the most of the doctors, they are not very satisfied. The people who go there from Pakistan, they are mostly doing locum jobs, and everyone, they say that it's better that if you are moving there as a family, it is better that both of the people are working there, then you will make a very good income out of it. Okay, so job opportunities according to competency level. What is the difference between FY1 and FY2? Dr. Saad has already explained this. Junior clinical fellow and senior clinical fellow. So junior clinical fellow is also a foundation year 2 job, and it has the same role. And while you're working as a FY2 in UK, please keep in mind that you would be given quite a less hands-on experience. You would be mostly given the responsibilities of taking blood samples, doing some clerking. So you need to keep this in mind, that if you're going to UK as a junior doctor, initially you will be mostly doing the basic thing. The senior clinical fellow, it is basically a middle grade level job. So the last point is that impossible can be made possible by hard work and consistency. So if you are planning for the PLAB 2 route,
it is doable. It is doable for everyone. Okay, but you need to. This is the final year is the best time when you need to plan that what are you going to do in future. So I would be taking your questions now so that I can finish the conversation quite quickly. And so if you have any questions, please put in the chat box, and I would be very happy to answer these to everyone. Okay, so if someone has cleared USMLE step exam, is that person exempted from PLAB exam? So yes, if you have cleared two parts of USMLE, I think there are some exceptions that you will be exempted from PLAB exam. They consider the USMLE if you have cleared USMLE 1 and USMLE 2. But I have seen a very few people that they have cleared USMLE step exams and then they are moving to the UK. Guys, have any other question? Okay, so one of the guy already asked that is PLAB still a better option considering saturation of it? PLAB or MRCP, which option is better? So what I would say is that I would suggest that everyone would say you that if you haven't started the PLAB route already, then Royal College exam is the better option for you. Okay, and specifically the MRCS route. MRCS route is currently the quickest and most economical way to get GMC registration. I got motivated for MRCS A exam by my own house officer. So you can apply for PLAB 1 exam, MRCS A exam while you are working as a house officer. It is a doable exam. The difficulty level is a bit higher from PLAB 1. But if you give it like good proper time, you can clear it in 4 to 5 months. And the MRCS B, you can also give it in Pakistan. So if you plan quite nicely the MRCS route, it can be covered in 1.5 to 2 years, and you will get GMC registration. And the whole cost, it would nearly cost you about 9 to 10 lakhs. So this, at the moment, I would say that MRCS is the quickest and comparatively the best way to get GMC registration. Okay, so let me see. Do electives in Okay, Pakistan Dr. Abbas, we are having a question from YouTube that which one is more better, PLAB or USMD? Okay, so first of all, it depends upon your personal preference. This is quite a subjective question. If you are a fourth year student and if you have good finances and if you feel that your parents can support you good enough, then USMLE is the best option. Okay, so it varies from person to person. So I would say that if you are a fourth year student and if you have good finances, then it's better that you opt for USMLE exam. Okay, so one guy asked that how can both the partners land in the same hospital considering saturation? Okay, so first of all, you need to keep a few things in your mind that if you are moving to UK, you should be able to compromise on things. Okay, even if you are earning like £4,000 per month or £5,000 per month, you will be living in a flat. You will be far away from your family, and you might have to compromise on a few things in the beginning because no path is quite simple. NHS system, it is quite helpful that if both partners are working in the NHS, they you can request them, and sometimes they can make it possible that the both the partners, like after working for 6 months or 1 year, you can put in a request, and there have been occasions where they have fulfilled the request, and I've seen a lot of people that are working in the
same trust as well. Okay, so if we can give PLAB after 2 to 3 years after house job, is there any problem regarding job opportunity or selection in NHS? Okay, so there is no problem regarding the job opportunity level. It is quite high. So, like I explained my situation, that after doing my house job, I worked as a demonstrator. Then I did my training. I am currently working as a third year resident. I did MRCSA. Even then, I had to apply for like 3 months. I had to update my CV a lot of times. Then I got interview offers from two trusts. So the thing is that you need to be consistent. I would suggest that even if you are giving PLAB after 2 or 3 years, do not waste your time just waiting for the exam. If you're staying in Pakistan, try to improve your CV, try to get to start your training somewhere. So that would be the best thing. Okay, are the academies online for PLAB 2 in UK? So their academies different things. Okay, they teach you online as well, and they are in-person academies as well. So when you will be going to UK, you will be attending all the sessions in person. Do electives in Pakistan hospitals add to your CV in Shaukat Khana Mushifa? Yes, it always adds up to your CV because they will see that the student is quite motivated, that he started doing electives while he or she was working as a medical student. So it puts a very good thing. IMC versus GMC, which one is better? Okay, so this is a very important and a very good question. So regarding if your main purpose is that you want to improve your financial status, IMC could get you into the IMC could get you a job quite early. But if you would ask most of the people that are already working in Ireland, their main goal is that they want to move in UK and in the NHS as early as possible. So what few people do, which is a very good thing, that when you have cleared your English exam like OET or IELTS, you can start the IMC registration process. For the IMC registration process, you only need to clear your English test exam, and you need to pay a fee. It costs you around the whole process costs you around 4 to 5 lakhs, and it is a good thing. Some people, what they do is they get IMC registration, they start working in Ireland, they get their financial status improved, and then they apply for PLAB exams or even USMLE exam as well. So it's better that if you start both process at the same way, because for Irish Medical Council, you only need to clear your English exam. Does ALS and internship done in Pakistan count in PLAB? So you need to, for everything, you need to sell your CV. In interviews, they would ask you that what is your clinical experience. So you need to sell your CV that what you did while working as a house officer, how well you write your CV, that matters. Regarding the courses, they only accept the course that is done in UK, that is under the Research Council. I also did some workshops under my training in the FCPS. It puts a good effort, but nowadays they are putting essential requirements that they need people who have some NHS experience or who might have done ALS courses. So it's better that you do a ALS course while you go for your PLAB 2 exam. From co-training to consultant, how much years can it take max? Can the IMG somehow land in the run-through training? Well, for co-training to consultant, it varies for person to person, to be honest. If you have very good experience from Pakistan, your CV is quite good, you have some Royal College exam, you might need to work for only 6 months as a junior doctor, and then you can start your training process depending upon the portfolio that you have. For example, if you're doing surgical training, you need a very good CV to work in UK, and the training process, it can last for 7 to 8 years, and it varies from person to person. You cannot put a specific year to it, that you will be a consultant in 6 year or in a 7 year. So it all depends upon your CV. What is eligibility criteria for taking Royal College exam? Someone doesn't plan to take PLAB exam. So I would guide you about MRCS. So for MRCS, you only need MBBS degree. For MRCS A, you can give it during your house job.
And once you're done with your house job, you can apply for MRCS BA as well. You just need to prove that you have enough experience in surgery, and it doesn't mean that you need to do surgical training for that. Is it easy to get into training in UK after PLAB? So, like I said, this is a subjective question because it is not even easy to get into training in Pakistan after doing FCPS1. So you don't need to look for shortcuts. Nothing is easy, but if you're consistent, you will get and achieve whatever you want to do. How to get electives and can we do them while we're in UK for PLAB 2? What documents would we need to get an elective? So what you can do is the best thing is that you need to ask your seniors that have already done some clinical attachments or who are working in NHS. They can recommend you if you know any consultant who is working there. What my friends did that we knew of a few people that have been working in the UK as consultant. So we contacted them and they hired us for the clinical attachment. So the best way to get clinical attachment is that if you have some reference or you can ask some senior and they can recommend you for that. Does gap year before MBBS affect PLAB MRC's journey also? Is there no, there is no age limit. When I was giving my PLAB 2 exam, there was a woman from uh, Korea, and she was like 48 years. And there was a person from Pakistan. He used to work as associate professor of general surgery in Sahiwal, and he was there to give his PLAB 2 exam. Okay, which certification AMC1 or PLAB 2 typically provides better job opportunities? It varies. If it depends that what your goal is. If you want to move to the Australia quite quickly, but AMC is quite a difficult route. So people nowadays they are doing that. They do PLAB 2. They try to get a job in UK and they work for 1 year and then they are moving to Australia. So people say that it is comparatively better route. I've heard people saying that after a certain level of training, they will move to Middle East. Is that possible? If yes, then at what training level? So it depends that what kind of experience you have and what things or what expertise you have. Middle East people, if your only purpose is money, you can work there as a GP, but there won't be any progression. You as a student need to, this is the time for you to decide that what you want in your life. Do you want a progression in your life? You want to work as a consultant, or you just want to run away from Pakistan and work, and you are happy with working as a junior level doctor? So this depends upon person to person, that what is your primary goal is. For me, my primary goal is that I want to work as a surgical consultant. I have got the GMC registration, and my goal is that I might move when I can join a job at the junior level. When I can join the job at a senior level. So it depends upon you that what your primary goal is. Okay, it looks like that you guys have saved all the questions for me, but it's a good thing. So if someone has become a junior doctor and is simultaneously pursuing an FRCPS in Pakistan, what should they do? Again, these are all subjective questions. Like I said, you after this session, just sit down and have a conversation with yourself that what your primary goal is. Nowadays, the primary goal for everyone is that they just want to run from Pakistan. Okay, so if you can get a job quite early before you have started a training, I would say just run. Go and get a junior level job and build your CV there and have a great life. But if you have started a training and you are in the midway of your training, then it's better that you just give a couple of years to yourself, because PLAB route you won't be able to get a job straight away. You might have to wait 2 years, you might have to wait 3 years. So you need to keep this in mind. So it's better that you keep your options open in Pakistan. Okay, UK versus Middle East countries, please compare. Why do you guys want to go to Middle East so badly? Again, a subjective question. It depends upon your preference, that where do you see yourself in few years. The UK life, it looks good, but you can get depressed. Like I said, that you have to live in a flat. It's always raining there.
So these are the questions that you can choose. The best thing is that you keep your opportunities open, and when you have both the options, make your portfolio so good that even people from UK and Middle East want you, and then you should be the person who should make this decision. Middle East is a good option if you have good experience. They want to take you if you have only experience from Pakistan. So if you have experience of UK, so yes, you can move to Middle East. These are Muslim countries, and you can have a good life there. Okay, so now I'm going to filter some questions because there are a lot of questions. So does the PLAB exam have a time frame for acquiring a job in NHS like the IELTS expire after? No, PLAB exam doesn't have a time frame. So one important thing is that you need OET, valid OET for two things. Once you are booking your PLAB 1 exam, and then you don't need your OET for PLAB 2 exam. You need to have your valid OET or IELTS when you are applying for GMC registration. They have make a special exemption that if you get your GMC registration and you apply within 3 months, if you have cleared PLAB 2 and you are applying for GMC registration within 3 months, so the validity becomes for 3 years. So when I got my GMC registration, my OET has already been expired, but because I got my registration within 3 months, so that's why my validity got bit enhanced. Okay, so you cannot get training in IMC or Middle East. You can get training in IMC if you have a good CV. Everything depends upon your portfolio. But we are today covering PLAB 2, so I'll just see the questions involving that. We can have another session on the IMC some other day. What would this pathway look like? You end the question whether you want most of PLABs being less than PLABs and many other. Well, it depends that what do you want. So these are the last two questions that I'll be taking because I have a night duty and I'll be moving there. I tried my best to be more interactive and answer your questions. So during highest job, we should focus more in gaining clinical experience or sparing time for studies. I would say both. You need to be uh, do some smart studying. Like I said, it's the best thing that you keep your easiest rotations in the last, because that would be the time when you will be planning that what do you want to do in your future. So your last rotation should be the easiest. Please don't take pediatrics in the last. Don't take general medicine or gynecology in the last. Okay, so these are the few things that I would mention. So most of the students, they are from fourth year and final year. For fourth year, my advice would be please focus more and more on research activities. This would be the best thing for you. For final year students, please get some basic knowledge about clinical audits and quality improvement program. These are the easiest things that you can do during your house job. So thank you so much for inviting me, and I hope that I have answered most of your questions. And thank you so much, and I wish all of you best of luck for your futures. Thank you. Okay, thank you so much, Dr. Abbas, for such an overwhelming session. It was really nice. And now what I am going to do is I'm going to call Aisha Seher, who is the National President of Education in SYNCH. So she is going to be here. So let's welcome her. Assalamu alaikum. Am I audible? Am I audible or not? All right. So first of all, I'd like to thank Dr. Syed Naki Abbas for joining us. Thank you so much, sir, for such a detailed session on PLAB and particularly on CV building. The points you told us, they're like, more than enough, and we can focus on that, particularly for the students who are in fourth year or final year.
we would like to thank you. Basically, Singh Pakistan would like to thank you for joining us and making this session valuable for the students. And there's a question that was being asked by someone in my DM, so I just wanted to, deliver it to you. What about the BTLS and ETLS courses? Like you just mentioned that they're important in our CV, right? So, should we go for the international universities, if they offer online courses like for BTLS and ETLS, or should we focus the national universities for that? Okay, so if you guys can get the international courses, this is the better thing. Okay, you can do ACL, you can do any course that are being currently done in Pakistan, but they would always prefer that if you have some course from a international organization, you can also do some online courses. It is better than doing nothing. So you can do this, but I would suggest that it's better that you do your courses from some international organization. All right. I would like to thank you again, Dr. Syed Naki Abbas, for this session. And with this, we would like to end this session. Particular thank to SYNCH HBS for helping in organization of the session. And thank you so much for all the participants for joining it. I hope that you guys enjoyed and you guys had the valuable information from this session. Thank you so much, and Allah Hafiz.